So after writing the date and the year common, we will first move to a first transaction. The first transaction was of a purchase. So write down over here 1st of March, purchase of 600 units, that is 600 kg, rate was 4. So how you will be getting the amount? 600 into 4 when I do, I will be getting the amount of 2400 rupees. Now we do not have any other transaction on that day, so directly yehi jo hoga, that only will be our balance. This only will be our balance. Now next transaction is on the 4th of March and it is of a sale. 300 unit has been sold. So on 4th March, go to the issue column and write down 300 units. Now how you will be getting the weight? Rate कैसे find out करोगे? Amount divide by units. Amount divide by units, if you do 2400 divide by 600, if we do, we will be getting a rate of 4 rupees. So 300 into 4 if I do, I will be getting a 1200 rupees. अब क्या हो गया? बैलेंस में से 300 यूनिट्स कम हो गया, करेक्ट? फ्रॉम दिस बैलेंस 300 यूनिट्स कम हो जाएगा, तो बैलेंस विच विल बी लेफ्ट विल बी 300 यूनिट्स. अमाउंट 2400 minus 1200. So I will be getting 1200 rupees. So we have to find out the weight because this is, we are doing with a weighted average method. So 1200 divided by units, that is 300. So you will be getting 4 as a rate. Clear? Next transaction is on 5th of March. This is a purchase transaction of 300 kgs. Rate is 3.80 per kg. So write down the date first. In the purchases, write down 300 kg, 3.80 is the rate. So when we multiply this, we will be getting the amount of 1140 rupees. अब क्या हो गया? परचेज किया तो मेरा बैलेंस इतने से बढ़ जाएगा, तो आई विल हैव टू ऐड दिस. सो 300 यूनिट्स का बैलेंस था प्लस 300 यूनिट्स इज बीन परचेज. सो टोटल यूनिट्स विल बी 600. 1200 was the amount. 1140 is the purchase amount. The total amount will be 2340. When I found out the weights, how you will be getting the weights? Amount divided by units. So 2340 divided by 600, if we do, we will be getting 3.9 as a rate. Now we have a transaction out of purchases. What is the other information they are providing to us? That out of the purchase which we have done on 5th of the March, 50 kgs were returned to the suppliers on 8th of the March. जो हमने परचेज किया था 5th मार्च को, हमने 8th मार्च को 50 kg उसमें से लौटा दिया. ठीक है? तो now this is nothing but this is my purchase return. मैंने जो परचेज किया मैंने उसमें से 50 kg मैंने रिटर्न कर दिया. So this is a purchase return. तो मेरे जो बैलेंस है, व्हाट इज माय बैलेंस? 600. उसमें से ये 50 kg अगर मैं रिटर्न कर रही हूँ, इट इज गोइंग आउट फ्रॉम दिस, तो वो क्या हो जाएगा? उतनी बैलेंस यूनिट से कम हो जाएगा. सो हाउ वी विल ट्रीट दिस परचेज रिटर्न एज? तो हम कहां पर लिखेंगे इसका इफेक्ट? वी विल बी गिविंग दिस इफेक्ट लाइक अ सेल. हम इसका इफेक्ट एज अ सेल देंगे. क्यों? क्योंकि उतनी यूनिट से मेरा अभी बैलेंस कम हो रहा है. So after 5th, we will be writing down 8th as a date and 50 kgs we have returned. What we have to take a rate? We will be taking this wala rate, 3.9. So 50 into 3.9 if I do, I will be getting 195 as a amount. So अब balance में से इतना कम करना है, तो 600 minus 50 will give me 550. 2340 minus 195. If I do, I will be getting 2145. Find out the weight. Weights के find out करेंगे rate. So 2145. If I divide it by 550, I will be getting 3.9 as a rate.
क्लियर? सो दिस वाज अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ परचेज रिटर्न. तो हम अगर रिटर्न कर रहे हैं तो मतलब मेरे बैलेंस में से इतनी यूनिट्स अभी 50 kg कम हो गया. सो हियर वी विल बी ट्रीटेड लाइक अ इश्यू. नेक्स्ट वन is on 18th of March. We have purchased 200 kg and what was the rate? 4.20 was the rate. So chalo write down here 18 200 kgs का purchase rate was 4.2. Now before this class, wait, before this we have to do the transaction of 10th. Before 18th we 5th के बाद 10th का transaction रह गया. On 10th we have purchased a sale, we have sold the goods of 200 units. 200 kgs has been sold out. So here we will be writing down 200 in the units column. 3.9 is the rate. So 200 into 3.9 if we do, we will be getting 780 as the answer. अब सेल हुआ मतलब उतनी यूनिट्स कम हो गई, तो 550 minus 200, this comes to 350. Amount minus करो, 2145 minus 780, this will give me 1365. चलो, any doubt till here? Next transaction now it will be of 18. Purchase का transaction 200 kgs is purchased for 420. So 200 4.20. This will be amounting to rupees 840 rupees. अभी मेरे बैलेंस में अभी 200 यूनिट से बढ़ जाएगा. So 350 plus 200. This will be 550. 1365 plus 840. This will give me 2205. Find out the weights. 2205 divided by 550. This will be coming to, अगर 2 decimals तक जाएंगे तो this will give you 4.01 और इसका weight 1365 divided by 350. Now next transaction is on 23rd of March. Sale of 400 kg has been done on that date. So write down 23rd March. Sale of 400 units is done. What was the last day rate which we got? 4.01. So 4.01. Multiply 400 into 4.01. You will be getting 1604 as the amount. चलो, अब क्या हुआ? सेल हुआ है तो इतने से मेरी यूनिट्स कम हो गई. सो बैलेंस विच विल बी लेफ्ट विल बी 150. 2205 minus 1604. If we do, we will be getting 601 rupee. Find out the rate. Amount divided by units. If I do amount divided by units, and we have to go up to our 2 decimals, so it will be 4.01. Now we have other information which is also given. Out of the sale on March 23rd, a customer returned 20 kg on 26th March. 26th March को क्या किया था? कस्टमर ने 20 kg रिटर्न किया. हमें रिटर्न किया, हमने जो सेल किया था वो हमें रिटर्न आया. So this is nothing but this will be treated as this is a sales return. अब देखो, मेरे पास 20 kg मेरे बिजनेस में वापस आ रहा है, ठीक है? तो माय स्टॉक, जितना मेरा स्टॉक है उसमें दिस 20 kg विल गेट इंक्रीज. So this will be treated as like a purchase.
है एक्चुअली क्या है, ये सेल्स रिटर्न है, कस्टमर ने मुझे इतना केजी वापस दे दिया, तो मेरे यहाँ इतना क्या हो जाएगा, उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा. What was a rate? It was 4.01. So 20 into 4.01 if we do, we will be getting 80.2. ठीक है. So take it like a 80 only. So it would be easier for the calculation. मेरा बैलेंस इतने से बढ़ गया. So 150 plus 20 will give me 170. 601 plus 80. This will give me 681. Find out the rate. 681, that is amount divided by units, 170. This will give me, go up to a 2 decimal. Again it will be 4.01. Next transaction has taken place on now. After 26, I have written one more transaction over here. On 27th March, 200 units were transferred between the batches. अब क्या हुआ, एक बैच से दूसरे बैच में हमने ट्रांसफर किया है 200 यूनिट्स को. ठीक है. और इज अगर बैच नहीं आया तो यू दे कैन ऑल्सो गिव यू लाइक कि फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर स्टोर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर. तो नाउ द इफेक्ट विल रिमेन द सेम. देखो दिस इज कैसे. नाउ आई एम टेलिंग यू कि ऑन 27th ऑफ मार्च मैं परचेज डिपार्टमेंट से 200 यूनिट्स मैं सेल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही हूँ. टेल मी whether any purchase or the sale has taken place. क्या कुछ परचेज या तो सेल हैज टेकन प्लेस? क्या कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व हुआ? नो. व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमने सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया. फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक बैच से मैंने दूसरे बैच में ट्रांसफर किया. सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस. अगेन अगर और एक सिंपल एग्जांपल ले, चलो, if your mobile phone has been kept in the bedroom and you all are sitting in the living room right now, तो मैंने तुम लोगों को बोला कि आई एम सेंडिंग यू द नेक्स्ट लेक्चर का लिंक. तो अब तुम लोग क्या करोगे, बेडरूम से तुम लोग ने मोबाइल फोन लिविंग रूम में लाया, तो क्या तुमने कुछ परचेज या सेल किया? नहीं. क्या कोई मॉनिटरी ट्रांसफर किया? नहीं. सो देयर वोंट बी एनी एंट्री फॉर सच ट्रांसफर. There won't be any entry for such transfer. ठीक है. सो जब भी ऐसा आया कि दिस ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, फर्स्ट सी के वेदर एनी सेल या तो परचेज का कुछ हुआ है क्या, ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस? नो. सो देयर वोंट बी एनी एंट्री फॉर द सेम. ठीक है. देयर वोंट बी एनी एंट्री. सो नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी ऑन 29th ऑफ मार्च. सो राइट डाउन 29th. Purchase transaction 400 kgs is purchased for 4.40 rate. So what will be the total amount? 400 into 4.4. This gives me 1760. So add 170 plus 400. This will be 570. Add the amounts 681 plus 1760. This will be 2441. अब क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करेंगे. कैसे? अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स. सो 2441 डिवाइड बाय 575 do, I will be getting the 4.28 as an answer. Go up to a 2 decimal, you will be getting 4.28. Next, now the last transaction that has taken place at the end of the month on 31st of March. This is a sale transaction of 300 units. So go in the issue and write down 300 kg. Rate, this rate you will be taking it up 4.28. So 300 multiplied by 4.28, when we do, it will be 1284 rupees. इतनी यूनिट्स मेरे पास से कम हो गई तो 570 minus 300 if I do, it will be 270. Same way, amount 2441 minus 1284. This will give me 1157. Find out the rate.
1157 divided by units. So this will be 4.28. You have to go up to a 2 decimals. ठीक है, तो 2 decimal तक लाया, राउंड ऑफ किया तो 4.29 is what the rate we got it. So last column, what we used to do, we used to write down the total, take a total of purchase. It is coming to how much? See down, 6220. Okay, a value of closing stock, value the closing stock. We have to write down the last line. Closing stock is valued at 270 units at rate of rupees 4.29, which is amounting rupees 1157 by weighted average method. You have to mention that this is the valuation by which method. So you will have to mention this valuation is by a weighted average method. Okay? You need to write down this. Don't forget to write down that this we have done with a weighted average method. If someone asks you to find out in the exam, अगर तुम लोगों को बोला इसमें cost of goods sold find out करो, so it is possible to find out cost of goods sold by taking the formula. COGS will be equal to opening stock plus purchases minus value of closing stock. Everyone just calculate, and in the next lecture you will be telling me the answer for this. Huh? ठीक है? Then how to rectify, कैसे, sorry, how to do the verification कि COGS का जो amount है वो same है या नहीं. अगर ये सेल के कॉलम का टोटल करोगे एंड जो COGS है, if you are getting the same, if you are getting the same amount, it means your COGS is correct. This is how the verification has been done. ठीक है? So in the next class you all will be calculating COGS and giving me the answer. Okay?